डिलीशियस है। फैंस तो यार शाहरुख सलमान के होते हैं, हमारे तो आई एम अ डीवा। मैं घर पे पानी भी नहीं लेती क्योंकि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ बैक कल्चर। अब जो मुझे जहाँ से फेम मिल रहा है मैं उन्हीं से थोड़ी बदतमीजी करूंगी। और डर क्यों नहीं लगता यार, मैं भी डरती हूँ। मुझे भी लगता है कि जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते जाते हो वैसे वैसे आप उस सक्सेस को सिक्योर करना चाहते हो। टॉक्स एंड फेलियर्स, आई डोंट नो व्हाई डू पीपल मेक इट अ बिग डील। आई फील दे आर नॉट big deal. It's just like these days it's like getting any other procedure like Yes. facial कराने जैसा है. Hello everyone, this is Ocean Fernandez from Midday.com, and today we are in conversation with the mother of all fashionistas who's out with her brand new reality show, Follow Kar Lo Yaar. Please welcome Miss Urfi Javed. Hi Urfi. Hi, how are you? Nice to meet you today. Same. So, Urfi, this is the first time where you are the main character. You are not a part of a bunch of things where there are other people or a guest on a reality show. This is your baby. How does it feel? I mean, this is a follow reality series, and like, if we can say I'm the protagonist. Yes. Yeah, for the first time in my life. But the story is not just about me. It's I have a lot of siblings, my family. So the story revolves around that. Did you sit down with them to maybe convince them like What convincing? My word is the last word in the family. I tell you to do something, you have to do something. Awesome. Yeah, they don't want to go against me. They're very scared of me. I like to believe that. So Urfi, how long have you shot this series, and then how much 2 are we months the cameras were following me. And is there a season 2 in the works? यार अभी सीजन 1 हिट होगा तभी सीजन 2 आएगा ना. क्यों नहीं हिट होगा? I mean, you have a loyal fan following out there who adores you. No, I don't think I have fans. Really? No, I don't. What do you think about the people who look up to you? Well-wishers है. फैंस तो यार शाहरुख सलमान के होते हैं, हमारे थोड़ी हैं. नहीं, फैंस ही हैं. पक्का. हाँ, अभी फैंस बन जाएंगे. I'm hoping. Awesome. So a lot of times you have to generate content, in other reality shows जहाँ पे काफ़ी कुछ scripted होता है, but then here you are the content, everything is around you. How are you going to make sure that people get engaged to watch this? मतलब क्या अलग कर रहे हो अभी? यार मुझे नहीं पता है. मतलब हमने तो, मेरी लाइफ तो कैमरा फॉलो कर रहा था, और जहाँ तक मुझे पता है मेरी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अभी इंटरेस्टिंग बोल लो, ड्रामा बोल लो, है सब कुछ है. पहले मुझे लगता था, मैं हमेशा भगवान को बोलती थी, भगवान क्या एक दिन में रेस्ट कर सकती हूँ? कुछ ना कुछ होता ही रहता है. बट नाउ आई रियलाइज कि दीज थिंग्स हैपन इन माई लाइफ क्योंकि एक रियलिटी शो बनना था. सो इट्स माई लाइफ इज क्रेजी. During the process of shooting, कभी ऐसे लगा कि यार अभी in the middle of it, did you feel like giving up कि नहीं हो रहा है अभी? No, मतलब see, it was my life. Yes. So अभी वो तो लाइफ पे कैसे गिव अप कर दे? So it was just the cameras were around while I was doing my shit. Were you conscious of the fact that there are cameras following you constantly, and where you? No, I love it. In fact, जब हमने मतलब जब कैमरास नहीं थे, जब शूटिंग बंद हुआ, I was like, damn, I miss the cameras. Like, oh my god, कुछ भी होता मैं कहा shit यार, cameras होने चाहिए थे यार. It takes me back to the time when Kim Kardashian, where before she became the Kim Kardashian, this is how she started. She started with fashion, she started socializing, and now her reality show has been a part of seasons and decades and years. Is that where you're going forward? I don't know. In this current age, we cannot tell where we are going with anything. And honestly, I'm not trying to follow her or anything. It's बहुत difference है हम दोनों की personalities में. I think the only similarity that I draw is that we both are very ambitious. Yes, you are. Otherwise, बहुत difference है. In the promo, you said that जब success आ जाता है, तभी everyone is not happy with your success. Did you experience this in your life where पहले people would like resent you or don't want to be associated with Urfi Javed, but now that you are the Urfi Javed, they are like, now I want to be your friend. Initially people didn't want to be my friend or even talk to me. Like even the friends were a bit hesitant to be seen with me. But now everyone is supportive. It's okay with me. And उनको नहीं पता था उस टाइम पे. मैं समझती हूँ उनका दिमाग में क्या चल रहा था. You inspire young minds, Urfi. You are the epitome where everyone thinks that if you put your mind to something, it is achievable, although there's a lot of hard work. But then काफ़ी लोग होते हैं जो आपको बीच में pull down करने की कोशिश करते हैं.
how do you maintain your sanity? How are you so mentally strong? I want to know your secret. भैया कोई सीक्रेट नहीं है, लाइफ है, चलते जाना है. देयर इज नो सीक्रेट. आई थिंक एग्जिस्टेंस इज पेन, लिविंग इज डिफिकल्ट, बट क्या करें, करना है. मी बीइंग ओवर एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस, तो करना ही करना है. Nice. Talking about your love for fashion, generally people flaunt brands, but you are a brand. Did you ever think about making money out of your craft and your skill? कि मुझे I want to launch a line or something like नहीं that. नहीं, वैसे नहीं, मतलब मनी, आई एम मेकिंग मनी Yes. बाय डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, Yes. बिकॉज मुझे पैसा कमाना है. बट नहीं, मुझे अपना कोई You don't want to नहीं नहीं create an clothing, outfit line or नहीं clothing नहीं line or clothing something line. like that. I going through your Instagram feed, there's a lot of fashion, but then beach mein you always plug in reality checks where you will post children who are living on the streets, and you say like not everyone has it all, sabke paas sab kuch nahi hota hai. Why do you do that? Why do you keep reminding people to humble themselves? Are No, you I'm reminding myself. reminding I'm a yourself? diva. मैं घर पे पानी भी नहीं लेती हूँ. उस सेंस में I'm different, but I still feel we all have to be kind. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब जाके पानी का ग्लास देने लगो, अपने घर में झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन लगाओ, नहीं. Just it's not. I'm not even asking people to be kind. I'm actually reminding. There are days when I feel like I need to be kinder. I need to realize कि दुनिया में बहुत दुख दर्द है, and it's inevitable. We थोड़ा सपोर्ट करने में कुछ जा नहीं रहा है. Have you ever let success or fame get to you? I don't think I'm successful. I don't think I'm famous enough. So क्या पाएगा? You share a great bond with the paparazzi, and it's something very rare, and not everyone shares that same kind of bond. कोई उनको हकाल देता है कि अरे मत करो, पीछा मत करो, क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हो? But you have a very good bond with them. How has that developed over the years? क्योंकि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ पैक कल्चर. अब जो मुझे जहाँ से फेम मिल रहा है, मैं उन्हीं से थोड़ी बदतमीजी करूँगी. एंड ठीक है, आई नो दीज पीपल बाय देयर फर्स्ट नेम बेसिस, दे नाइस टू मी, वी चिट चैट, आई लाइक देम, एंड I mean, there's no reason for me to be rude to them. They're just doing their job, honestly. वो अपना काम कर रहे हैं. कल को नहीं करेंगे मुझे पैप, तो शायद मुझे ज़्यादा तकलीफ होगी. My career will be in trouble. And in fact, Indian paparazzis are still very respectable. बाहर तो वो तो क्या क्या बुला देते हैं, Yes. स्लट बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं. यहाँ तो फिर भी बहुत रिस्पेक्टफुली सामने से बात करते हैं. कैमरे के पीठ पीछे जो बोलना है बोलेंगे, सामने रिस्पेक्टफुल रहता है. काफ़ी बार ऐसे हुआ है, you have brushed with the law in 2-3 scenarios, but you're very outspoken, you don't get scared, be it social affairs, current affairs, news हो, कुछ भी हो, you make sure your opinion is there and it's counted. My question is, आपको डर नहीं लगता? नहीं, एज लॉन्ग एज अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, और डर क्यों नहीं लगता यार, मैं भी डरती हूँ. मुझे भी लगता है कि जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते जाते हो, वैसे वैसे आप उस सक्सेस को सिक्योर करना चाहते हो. आप नहीं चाहते हो कि कोई भी एक ऐसी चीज़ उस सक्सेस को, इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर दे. तो डर तो मुझे भी लगता है. Urfi, you're someone who has always been accountable for anything that you do. आप अगर प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी बात कर रहे हो, फिलर्स के बारे में बात कर रहे हो, बोटॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, you own up to it, unlike your contemporaries who are like, I've not done anything, it's all natural. Where does that confidence come from, and does it affect you or not affect you कि लोग आपके बारे में इतनी बारीकी से सब कुछ बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे क्या अफेक्ट करेगा. ऑनेस्टली इट्स before after pictures are there. Yes. People are going to know. So instead of saying things like I'm natural or whatever, it's better to just accept the truth. I feel it's out there anyways, yeah. And Yes. yeah, Botox and fillers, I don't know why do people make it a big deal. I feel they're not big deal. It's just like these days it's like getting any other procedure, like Yes. facial कराने जैसा है, Botox and fillers. Urfi, going forward, with the show coming out and everything, obviously the trailer is not out there for consumption, but from what we have seen, it's very raw, it's very you. Vulnerable नहीं feel होते हो कि मेरे सारे emotions, मेरे सारे weaknesses and strengths सब कुछ अभी public platform पे है? But if I've signed a reality show,
अगर मैं ऑडियंस को सब कुछ नहीं दिखाऊंगी तो वो कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, वो शो को पसंद कैसे करेंगे। रियलिटी शो का मतलब क्या है, यू हैव टू बी 100% रियल। एंड एज ए मतलब अगर आप एक इंसान हो, आप गुस्सा भी करोगे, आप रोगे भी, आप हंसोगे भी, कुछ गलतियाँ आपसे भी होंगी, कुछ गलत चीज़ें आपके साथ होंगी। नो वन इज़ 100% परफेक्ट, और आजकल परफेक्शन किसी को देखना ही नहीं है। Yes. इनफैक्ट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी फ्लॉड ह्यूमन बींग्स। मुझे परफेक्शन नहीं देखना, सो ठीक है, आई एम फ्लॉड एंड इट्स ओके बाय मी, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। Urfi, do you remember the year when you came to Mumbai? When was that? 2016. And what is the difference between that Urfi back then who came to Mumbai? How has the city shaped you to what you are now? Is there a difference? Yeah, of course there's a difference. I was hardly 19, 18, याद भी नहीं है। I was very young, I was very naive, but I mean, I didn't know a lot of stuff. अच्छा, ये delusional होना थोड़ा सा, Yeah. that's how you achieve stuff. I was very delusional. I still am very delusional. Any advice to someone who, you know, अभी तैयारी में है कि भाग के बम्बई आना है? I don't know, just अगर ठान लिया है तो give in your 100%. I've seen people running back to their hometown, 1-2 साल स्ट्रगल किया, नहीं हो पाता, फिर चले जाते हैं। और अगर ठान लिया है तो करना पड़ेगा। Awesome. So we'll play a quick rapid fire. One place to shop for the best fashion in Mumbai. You can't ask me that. I'll say garage, I'll say dustbin. No. One word that perfectly describes you. I don't know, there can be one word. 3 words. चलो 3 words कर देते हैं. Okay, unfiltered, crazy, prime piece. Awesome. 4 हो गए, but ठीक है। One Bollywood star you'd like to dress up. No, I'm not a stylist or a designer. इतना मेहनत कौन करे? नहीं, नहीं, नहीं। Unfiltered is what that answer would be. What is your fitness routine? Oh yeah, I work out like I wake up 6:30. I go to the gym at 8. Weight training for 1 hour. Then I also do some MMA sometimes. फिर उसके बाद 1 घंटा पिलाटीज। Wow, that's a lot. Yeah, I do it. What's in your lunch box when you're on set or when you're working? मतलब यूजुअली मैं रोज लंच तो सब्जी हो गई, चिकन, ग्रिल्ड चिकन, सब्जी, नो रोटी, नो राइस एंड सैलड्स। Nice. One fashion tip you swear by. बट मुझे पर्सनली टाइट फिटेड कपड़े बहुत पसंद है। आई वेयर रियली टाइट फिटेड क्लोथ्स। 3 must-haves in your wardrobe. वन फिटेड ड्रेस, हील्स एंड इयरिंग्स कोई भी। An outfit of yours that has taken the maximum amount of time to make. बहुतों भी लग जाता है यार। मे बी दैट बटरफ्लाई ड्रेस, Yeah. लॉर्ड, एंड देन मे बी दैट ड्रेस जो ट्रक से बाहर में निकली थी, दैट वाज टू Yes, the blue one. Yeah. Your favorite Indian designer. इंडियन डिजाइनर, अबू जानी, संदीप खोसला, कृषा बजाज, पापा डोंट प्रीच, शुभिका। And one person in Bollywood who should definitely follow you since follow कर लो यार. Everyone should follow me. Everyone. Awesome. Thank you so much. That's a you. wrap. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.